सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद में एसटीएस मन 24 का शुभारंभ हुआ। सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद में एसटीएस MUN 24 का शुभारंभ हुआ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि MUN का फुल मीनिंग मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें NCR के 30 स्कूल के 180 स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल स्वरूप, एक्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे। इनके साथ साथ स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना, डायरेक्टर विजय कुमार गुलाटी, डायरेक्टर विभा खन्ना और प्रिंसिपल रेणु श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वही सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि अनिल स्वरूप और डायरेक्टर राजा रमन खन्ना ने बहुत ही मोटिवेटेड स्पीच दी। अनिल स्वरूप ने अपने जीवन के अनुभव भी बच्चों के साथ साझा किया और उनके सवालों के जवाब दिए। मन की सेक्रेटरी ने इस आयोजन को औपचारिक तौर से आरंभ करने का ऐलान किया। वही हमारे चैनल पर भी सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। Now, how do you become a VIP? How do you become an important person? And that's what I'm going to talk about. What should you do to become an important person? And the best way to go about it, बच्चे ज़्यादातर टाइम फोन पे व्यतीत करते हैं किताबों पे कब, and everyone wants to make his or her presence felt there. How do you evolve as an individual to be reckoned with? The first problem that we face in becoming an individual to be reckoned with is that we tend to blame others for all the problems that we have. No? इसने ऐसा क्यों कह दिया, हमें तो पढ़ने नहीं दिया, हमारे फ्रेंड ने हमें पढ़ने नहीं दिया, हमारे फादर मदर ने हमें जाने नहीं दिया। मतलब आप दूसरे को दोषारोपित करना तो बड़ा आसान है। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा, आप मलते रहिए आईना। You will never be able to evolve as an individual if you keep blaming others for the problems that you have. Even if they are responsible for that problem, you cannot change the world. And very soon I discovered that I can't change the world. At best, I can change myself. And if I change myself, probably I'll be in a position to change the world. But it cannot be sequenced the other way around. You cannot think in terms of changing others. It means that you have to change first before you even expect others to change. So the focus is you, my friends, you and you alone. Until you realize this fundamental cardinal principle of not unnecessarily trying to change the set of circumstances that you are in, you will never be able to succeed in life. Success will come if you change. You know, it was very heartening discussion that I had this morning with your director, Mr. Khanna, to change himself much later in life, as I did. So there is no time when you cannot change. You can change for the better always, but it can only happen if you don't lay the blame of what you are on somebody else. Have you understood this point? This has to be understood and driven home. He has evolved as an individual. I mean, age was not a barrier for him. He evolved over a period of time. So, point number one that you should remember is, does anybody have power in this room to change his past? Anybody? Can you change your past? Past is dead and gone. But imagine the time that you spend on brooding over what happened in the past. आजकल इस देश में तो पूरी हिस्ट्री बदलने में लग गए हैं लोग। जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था तो मैं मंत्री से कहता था कि सर वो हो गया थोड़ा बहुत ठीक समझ में आ गया कि कैसा है कुछ चक्कर। फिर मैं अपने एक मित्र के पास गया, वो टीवी ये आप पे निर्भर है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। You know, unfortunately in our education system we've started this competitive spirit, competition. तो अपनी कॉपी को दूसरों को दिखाता ही नहीं। But if you are competing with each other, how will you learn from others? My friends, my suggestion to you is, don't compete with others. Compete with yourself. The reason is very simple. Every individual is different. He or she comes from a different background. They have different set of parents. They're very different. How can you compete with two different sets of people? But you can compete with yourself. You benchmark yourself. I'm so good now. I will try and improve. And in that, I have never looked back after that. We have absolutely no control. Do you do that? अरे वो धोनी ने अगर ये शॉट नहीं खेला तो इंडिया जीत जाती। और इसमें मैंने दो दोस्तों को लड़ते हुए देखा है।
सचिन तेंदुलकर इसने ऐसा क्यों कर दिया। अब आप उसका धेला भर नहीं कर सकते। उनसे चर्चा हुई, मैंने बहुत सीखा। इन्होंने कहा कि मैं किसी से बहस नहीं करता। क्यों? बहस में जीत रहे थे, क्या फर्क निकलेगा? बहुत बड़ी बात है। क्यों अनावश्यक बहस करते हैं आप किसी से? आप उसी काम में अपना टाइम लगाइए जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। टाइम वेस्ट क्यों करते हैं आप? बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया। आप सोचिए इस बात को। नो वन कैन इरिटेट यू अनटिल यू वांट टू गेट इरिटेटेड। जब तक आप खुद नहीं इरिटेट होना चाहिए, कोई बोलता है वो, मैं विंस्टन चर्चिल का फैन तो नहीं हूं, लेकिन वो कभी कभी बातें बहुत अच्छी कहते थे। उन्होंने कहा एक चीज, इफ यू कीप थ्रोइंग स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स एट यू, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। कुत्ते काम में भौंकना भौंकने, तो मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ जो बोलते हैं, लेकिन हो सकता है प्रवृत्ति आ जाती है। आप क्यों चिंता करें? चलिए अपना काम कीजिए, उसको करने दीजिए। सो यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम ओवर इश्यूज ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल। माय फ्रेंड्स, इफ यू डू दैट, यू विल सी यू हैव सो मच टाइम। इतना बढ़िया मुझे कम मिल सुनने। सो जिस दिन मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं बहुत सोचिएगा इस बात, छोटी चीज है, हम कितना अपना टाइम एफर्ट वेस्ट करते हैं उन इश्यूज पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब बात करने को तो बहुत कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत लंबी बात ना करके एक आध बात और कहूंगा आपसे। आफ्टर लिसनिंग टू मी फॉर पास्ट 10-15 मिनट्स, everyone is human being, you will be depressed. The question is, how quickly can you come out of the depression? How do you do that? मुझे याद है, after my stint in Delhi, I was posted as Secretary of Horticulture in UP. And this I am talking about 2003. And my minister was very corrupt, very corrupt. I have written about him in my book, Encounters with Politicians. उसका नाम ही 25% था। पहले बड़ी छोटी चीज़ों में मैं कह दूँगा मिल जाएगा। मैंने मालूम किया उस अफसर के बारे में, लोग बोले बड़ा अच्छा अफसर है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम मंत्री हैं, मिलने के लिए। वो क्या कहता है, मुझसे कहता है कि सर मैं उनसे कई बार मिला, जैसे वो मिलना चाह रहा है, मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 टाइप के करप्शन, नजराना, शुक्राना, जबराना। नो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ इट। दिस मिनिस्टर वांटेड सम नजराना, क्यों? कुछ ऑफरिंग दे, जैसे आप भगवान को देते हैं ना, खुश करने के लिए कभी काम मिलेगा, भगवान काम आएंगे, तो उस तरीके से ही वांटेड सम ऑफरिंग। अब मैं इतना उसमें तकलीफ में था, मेरे समझ नहीं आया कि मैं इस ऑनेस्ट कैपिटल ऑफिसर को कैसे बचाऊं। सो व्हेन यू आर इन डीप डिप्रेशन, तो आप उसी समय ईश्वर को याद करते हैं, तो अदरवाइज तो याद करते नहीं, जब मुसीबत होती तब याद करते हैं। मैंने याद किया, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे पाया, फिर भी स्तब्ध हूँ, व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, शायद अनजान हूँ। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। मैंने अपनी वेदना राम की झोली में डाल दी। बट सिंस आई वॉज एन ऑप्टिमिस्ट, I had a positive attitude, the answer came immediately, and that's the point that I'm trying to make here. If you have a positive attitude, if you look at things positively, the answers will come to you. An answer came in these lines which I've written in my books. समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए? उठो पथिक मत भ्रमित हो, डूबिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो गिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो, जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। I don't know if you have an option of asking questions from the audience. I would like to answer. Good morning, sir. This is Shruti. I am the Secretary General for this event that we have conducted at St. Teresa today. My idea is, like, I really admire your words personally, and I'm personally very motivated by whatever you write or post on Twitter. In fact, I follow you there. My question was that my idea has been stuck on that one fact about heels that you mentioned at the moment, since I am somebody who's wearing heels at the moment. You said that जो आप नहीं हो वो बनना क्यों है? But as a generation from the Gen Z that we say, we always have this particular phenomena in our mind called the fear of missing out of FOMO. When we see others aside us, then we find them better in some respect or the other, and there's always a constant desire to be like them. अगर मुझसे कोई टॉलर इंसान है, मैं उसे देखकर सोचूंगी कि यार काश मैं भी थोड़ी टॉल होती, तो इसके लिए मैं हील्स ऑन कर लूँगी. So that is where Maximum was from, this idea of changing ourselves and altering ourselves in some way. So where does the borderline exist? I mean, where do we stop like comparing ourselves to others? What is that threshold? And how do we keep ourselves grounded to our own self? It's not, I'm glad you asked the question that you asked. It's not very difficult.
deep inside you feel uncomfortable about trying to do things which you are not comfortable with. But you still do it. You still do it to impress others. कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोलता. Deep inside, if you reflect, you will understand ये मैं बेकार करने पहननी हूँ उसको. I mean, your articulation is phenomenal. I didn't have the articulation that you have at this stage. It's phenomenal. You are able to express yourself so clearly. I couldn't do that at your age. So that's the positive you have. Build that positive instead of your height. You will become much taller than people who are taller than you if you continue to the way you are. Those that are fond of cricket, I am very fond of cricket. Look at Sunil Gavaskar. Look at ape anybody. You may learn. Like for example, you have tremendous communication skills. I was advised. Ask you something that you mentioned something about Ghabrana, Shukrana and Nazrana. So can you elaborate on that? Okay. And one more thing I wanted to ask, that most often that when we organize events or when we meet new people, we do encounter corruption and we do see people who are dishonest and we want to point it out. But sometimes we're just not able to. So how do we deal with those people? Okay, let me answer this question first. तो आप बहुत चिंता ना कीजिए. If I talk about myself, I try to give a blind eye to every criticism I get, and that can affect me or my studies or the way I perceive myself and my improvement. But there is a time when I feel that I have heard a lot and I feel choked. But how greatly I have been affected by people's like the honest minister that was about to get suspended. Sir, I was so into your words that I was completely lost in your words. So sir, I wanted to ask that how did you resolve that issue, or were you able to save that person from getting suspended? Sir, how? Okay, I'll explain this to you. How to become selfish in a good way? Selfish in a good way is that instead of blaming talking about others, talk about yourself. With knowledge as a guiding light, we gather here a future pride. As directors, they're forced to share a vision for the path we here. May I request our Honorable Director, Raja Raman Khanna sir, to bless us with his words of promotion. Sir, please. Good morning to one and all, and my heartiest welcome to Anil Sabhuji, the former Secretary of India, Coal and Education. I'm very thrilled with the illuminating talk he has given to all of you, and it was so enriching. I have learned a lot of lessons from it. I welcome to all the students also from different schools who have come over here to participate. I am very delighted that all of them are very animated and they talk with discussion with him in a very enthusiastic manner. Dear students, if information was equivalent to education, then the libraries would have been the tallest saints of the world, and the books have been the sages, and the encyclopedias would have been the rishis of the world. What I mean to say is that information is not equivalent to education, and these views were expressed by a man of wisdom, Swami Vivekananda, when information era was going on. A person in possession of the information and the facts was considered to be the most intelligent person, and the route to the success or the staircases to the great universities was only through the information, because the information you rattle out in the examination halls, on the basis of that you could get good marks and get admissions in the good university. But the time has changed now. The pedagogy of teaching and learning has changed. Today information is available on the tap of the just fingers.
Just in your laptop, you tap it, all the information is available. So today what is needed is that your skills should be improved, lifelong skills you should learn, and then only you can be successful in your life. So many skills today, Sabrupji has already told, they are also part of learning itself to be successful in life. And our today's MUN 24 is also a step in that direction only, because when you participate in such workshops, such events, you do explore, you do experiments, you do experience also by coming here and participating in the discussions. That itself is a part of learning. Once you participate in such workshops or events, your fear also disappears. I do agree that so many of the students, those who are participating in this event, must be taking a maiden step. It must be a first one. But you should not worry about it. डरना नहीं है. डर के दो ही विकल्प है, या तो डर को डरा दो या डर से डर जाओ. अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं आज बोलने में ज्यादा 2 दिनों में, तो घबराएं मत. The most important thing is the experience you will be earning and gathering from these events, and that will be a lifelong learning for you. In my life also, sir was also telling that one day he spoke, he was singing song. At that time he could not be successful. I also remember that the first day when I was brought to the stage for speaking, my legs were trembling like a dry leaf. But it was my teacher who encouraged me that you don't worry. You may fail in the beginning, but at last you will be successful if you keep on practicing. So practice makes a man perfect. Another thing I would like to say here, that in our St. Teresa school, we always try that we should produce leaders. Leaders like Sabrupji, who are having bold ideas, independent ideas, and who is able to influence the people around him. लीडर दबाव से नहीं होना चाहिए. दबाव वाला लीडर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है. लीडर प्रभाव का होना चाहिए, who can influence others, who can influence the event. So today you see those 4 students. I remember that such type of an event was organized in one of my school in SG Public Senior Secondary School. The Eklavya organization organized MUN over there. I tossed the idea because I liked that so many students participated and they were so enthusiastic and energetic. I felt that such type of event should be conducted in St. Teresa School. I just tossed the idea to Madam. Madam, why don't we have such type of MUN 24 in our school in St. Teresa also? She liked the idea immediately. And I'm proud to say that we are always saying that we are producing leaders in our school. Madam passed on this idea to our 4 of our past students. I tell you, we always say that St. Teresa School is a family. Those students who have gone out of this school, they remain a part of our family. And the 4 students who have passed out of our school, they were given this idea to organize the MUN 24. They had their exams also, but on one thing of the madam, they came to ma'am, and for 3-4 months they have tirelessly worked to make this event a successful one. I know that the teachers who are involved, the students who are involved, and the students of other schools also, because in our school we do not consider that we should compete with the students of the other schools. We want the education should spread everywhere. So our teachers
had so many discussions with the students of the other schools also to make this event a successful one, a fruitful one. And I would like to mention the name of those 4 students. One of the students to whom Anil Swaroop ji have also praised that she has a very good communication skill. छोटी है but विचारों की बहुत मोटी है और बड़ी है. She has been a topper, one of the toppers in our school throughout, and she is so concerned about the studies also. I remember one day she got some less marks in one paper. Class 7. I think it must be 7-8 years back. And she approached me. सर मेरी लगता है पेपर में चेकिंग ठीक नहीं हुई है. And she approached to the madam and to the others also. They said, okay, हम आपके पेपर देखेंगे. Since I was also a topper throughout my career in my life, I had faced such type of situations in my life. I said nothing doing. कल का क्या मतलब है? बच्चा 2 दिन तक परेशान रहेगा. अभी इसी समय इसके पेपर चेक होने चाहिए. And she got more marks and her position was changed. Such type of girl she is. She is a targeted girl. I wish her a great success in life, and she should keep on performing like this. So today I would like to praise these 4 students. I would like to mention their names because it is said, if you do not appreciate somebody, you do not encourage the other people. आप उनको encourage नहीं करते. और अगर आप encourage नहीं करते हो, तो आप गुरु नहीं हो, आप टीचर नहीं हो. We must encourage our students. Shruti Manocha, Vaishnavi Singh, Divya and Nehal. All these and Indu madam. Come on, please come. Diya Singh, Shruti, Vaishnavi, Diya, Nehal Singh. Attached with our name. Because बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं, आपको सिखाया जाता है तुम्हारा नाम क्या है. जैसे मान लीजिए श्रुति है. श्रुति को श्रुति के बजाय श्रुति ना बुलाओ, कुछ और बुला दो. श्रुति को बहुत बुरा लगेगा और खास करके लोगों के सामने बुलाओ. तो अभी मैं दिव्या का नाम लेना, मैंने दिव्या बोल दिया था. बचपन से दिव्या बोलता हूँ, दिया को दिव्या बोलता हूँ. सर मेरा नाम दिया है. So we are so attached to our name, and that is because we have a deep inner desire in every human being being recognized and appreciated, and particularly by the name also. So I would like to shower my plaudits on these 4 students who have been illuminating stars of our school, and Indu madam also, who has been a coordinator. I know so many other teachers are also part of this organization of the event. If I forget to take the names, mind मत करिएगा. इसी वजह से बहुत बार मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लेता हूँ कि किसी का रह ना जाए. रह गया है तो वो 3 भी पीछे खड़ी हैं. 3 मुर्गियाँ मेरे को लगता है उनका पार्टिसिपेशन भी है. All of you have done well. So I am sure that this program will be a successful one, and all the students who have come here, करना नहीं है, भाग लेना है. UN के अंदर किस तरीके से resolutions पास होते हैं, we will try to have simulation of that in our school. हारना जीतना कोई बात नहीं है. हार गए तो क्या हुआ, जीत गए तो क्या हुआ. ये तो एक किताब का पन्ना है, अभी किताब सारी बाकी है, किताब सारी बाकी है. So to all of you, a great days, 2 days ahead. I hope you all will enjoy in our school. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for sharing your kind words. I'd like to add up that we have here with us Mr. Dipanshu Vilati, who is a guest of our today's event.
our national adornment, reaches its zenith when thoughts and ideas are conveyed through the language of soul, dance. The dance is a living tableau of our shared global challenges and aspirations. Each choreographed moment represents our collective responsibility to our planet and to each other. The dance's synchronicity mirrors the harmony we strive for in the international relations, an experience and the common ground we seek in for our debate. As the dancers weave pattern of unity and cooperation on stage, let their artistry remind us of the delicate balance we must maintain in our global community. May their fluid movements inspire us to move with similar grace and purpose in our diplomatic endeavors, always reaching towards a more harmonious and responsible world. And collaboratively developing solutions to global challenges. It is with great pride that we present the inaugural edition of the STSMUN. I now have the honor of introducing our Secretary General, Ms. Shruti Manocha, an esteemed alumni of the St. Teresa School. Greetings of the day to everybody. My warm welcome to our Honorable Chief Guest, Sri Anil Swarup Sir, the esteemed Director Board of St. Teresa School, Sri Raja Raman Khanna Sir, Sri Vijay Kumar Gulati Sir, Ms. Vibha Khanna Ma'am and our Principal, Ms. Renu Srivastava Ma'am, our coveted faculty members and all our enthusiastic participants here. Sri Anil Swarup Sir, whose mere name ignites the feeling of an unhindered passion and desire to be a good Bharatiya and above all, an amazing citizen, whose words never have failed to inspire people alike, which personally blows a lot of energy into me whenever I hear or read him. Anil Sir's contribution to the country is of course like the expanse of oceans, which buckets of words will surely fall short of spanning. We are extremely overjoyed to have you here with us, sir, today. St. Teresa School, our respectable directors and faculty members, who have never faltered to showcase their commitment to the idea of enriching the students with the values of courage, of patriotism. It is the power to stand up for what they deem right and to be the torchbearers of tomorrow. Because trust with your heart, serve with your mind, and love with your soul is what we have always stood for. Being an alumnus of this prestigious institution fills me with utter pride and joy today. The same place, the same dais, the same position, where I once started off as a kid, where I once couldn't reach even the top of this podium and had to stand on my toes, knowing about nothing to speak, to this point where today I'm speaking at not just another MUN event, but one of the most special and valuable days at my alma mater. But with the same energy and power today, क्योंकि as we say, सब बदल जाए, पर कुछ चीजें हैं जो हमेशा पुरानी ही अच्छी लगती हैं. The management and the secretariat has put countless efforts for initiating this marvel today. The spirit of energy and willingness to promote the flowering of reason and public speaking is what gathers all of us here alive today for this maiden edition of St. Teresa Model United Nations. With this vigor in our eyes, passion in our hearts, and power of debating in our souls, let's bring our arguments here and unite our voices for a change. क्योंकि कोशिशों की गर्मी से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, हौसले की दीवार के आगे हर संकट सर झुकाते हैं. By this, I, Shruti Manocha, the Secretary General, declare the maiden conference of St. Teresa Model United Nations 24 officially open. पटवाल सबकी खबर से इस वक्त सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम में आए हुए हैं, जहाँ पे चल रहा है STS का MUN. तो हमारे साथ इस वक्त चीफ गेस्ट है. सर, आपका सबके चरण बहुत बहुत स्वागत है. सर, जानना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको एक मैसेज मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये मिलेगा कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ सबके साथ चल के, सबसे बातचीत करके परस्पर वैमनस्य से आगे नहीं बढ़ा जा सकता. परस्पर चर्चा से और चर्चा के माध्यम से, समस्याओं के समाधान से. यूनाइटेड नेशंस की स्थापना इसी आधार पे हुई थी कि आपस में मारपीट करके या लड़ाई करके समस्याओं का समाधान नहीं होता. टेबल के अराउंड बैठकर चर्चा करके बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है, और हो रहा है. पिछले कई वर्षों से आप देख रही हैं कि UN ने ये स्थापित किया है कि विभिन्न देश जिनमें मत भिन्नता भी होती है, लेकिन वो आपस में बैठकर समस्या का समाधान करते हैं. ये अच्छा है कि बच्चे अभी से सीखें, क्योंकि समाज में जो विष फैल रहा है उसके विरुद्ध यही हो सकता है कि ये भी बताया जाए बच्चों को कि सिर्फ मारपीट से समस्याओं का समाधान नहीं होता, चर्चा से अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाता है.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस हमारे साथ सेंट टेरेसा स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना जी है। सर आपका भी सबका में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया कि भविष्य के लिए उनके लिए बेहतर होगा, तो क्या यही एक प्लेटफॉर्म है कि इसके अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है हमारे साथ? This is one of the best platforms. Schools are always the best platform, and we should keep on discussing such things in the school also. Such type of events are organized so that most of the students from other schools are also participating. When communication takes place, always knowledge increases. Because today also sir has told that one person cannot in himself the most intelligent person, because all people are having their own different personalities, and when all the personalities converge with each other, we get the best one. We are able to churn out the best one. So such type of programs are always best, but in the schools also we are individually also holding such type of platforms for the students to learn about the harmonious way of working with the world itself. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ सेंट टेरेसा स्कूल के डायरेक्टर गुलाटी सर भी हैं। तो सर आपका भी सबकी कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। सर एट दी एंड आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है हमारे सेंट टेरेसा स्कूल में, तो इस बिहार पे उन तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे आज अवेलेबल नहीं थे और वो स्कूल जो इस अम्यून को कंडक्ट नहीं करते, कोई ऐसा शॉर्ट मैसेज और स्कूल भी ये ऐसे स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म दें? नो डाउट यूनाइटेड नेशन जो है सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया में काफ़ी हद तक शांति यूनाइटेड नेशन की वजह से हुई है। कई जगह पे हम लोग कामयाब नहीं भी हुए, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल और हमास का युद्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में बहुत से ऐसे युद्ध हैं जो यूनाइटेड नेशन की वजह से ही मतलब रुके हैं, और बहुत सी ऐसे प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन से जो दुनिया में चेंज आई है। नो डाउट कि विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन वी कैन ब्रिंग द हारमोनी इन द वर्ल्ड, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर। यही मैं कहना है कि जो दूसरे बच्चे हैं सीखें कि यूनाइटेड नेशन में कैसे होता है। अगर हम यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म की बात करते हैं कई बार, कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया हमारा वहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि परमानेंट मेंबरशिप हमारे इंडिया को मिले, ताकि हम लोग अपने जो भारत की आवाज़ है वो ढंग से पूरी दुनिया तक पहुँचा पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल श्रुति मनोजा भी है, और उनसे जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तमाम स्टूडेंट्स को क्या एक शॉर्ट मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैं यही मैसेज इस एमयूएन के माध्यम से कन्वे करना चाहूँगी कि पहले तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोग इस एमयूएन को करवा पा रहे हैं, हम बच्चों में वो डिबेटिंग, वो पब्लिक स्पीकिंग का स्पिरिट इंस्टिल कर पा रहे हैं। पर हमारा मकसद इससे यही है, जैसा कि हमारे स्कूल ने, सेंट टेरेसा ने हमें हमेशा ऐसा पढ़ा कर बड़ा किया कि आज भी हम इस बात को याद रखें कि जो आपको सही लगता है उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए खड़े होकर बोलना, आर्टिकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है हर बच्चे को अपने स्कूल स्टेज में ये सीखना चाहिए कि कैसे आप दुनिया में होने वाली तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज रखकर आप उन पर आर्टिकुलेट करके बोल सकते हैं। थैंक यू श्रुति फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। थैंक यू।